Hello children, my name is Rashi and in this video we will be starting with example number 2. And example number 2 is on page number 120 of our NCERT book. So the example says, the price of a scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? So, the question says the price of the scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20% this year. Means, children, this is the question of increase percentage. We have already done this topic in our introduction video. Okay, so for solution, first we will write what is given. The price of the scooter. Rupees 34,000 and now it has increased by 24. So the increased amount कैसे हम निकालेंगे? Increased amount equals to 34,000 का 20% we will calculate. Okay, so we will get the increased amount. 10 से 10 cut and 10 से 10 cut. So we have 2 zeros left and 4 twos are 8 and 3 twos are 6. So ये जो 6,800 हमारे पास amount आया है, this is the increased amount. इतने से increase होगा. ये हमारा new price नहीं आ गया children. This is the increased amount. So now our new price will be 34,000 plus 6,800. Okay, so 800 to as it is. 4 plus 6 is 0, 1. Sorry, 4 plus 6 is 10. Yes, 0, 1 carry and 3 plus 1 is 4. So the new price is 40,800, not 6,800. 6,800 is the increased amount. And new price is 40,800. Okay, so don't get confused. Some children write that for 6,800 is the new price. No, हमने जो ये increased amount निकाला है ये इतने से increase होगा. So जो original price है उसमें add करेंगे ना. So 34,000 plus 6,800. That will give us 40,800. Okay, so this was our example number 2 of chapter 8. Now let's come to example number 3. Now, example number 3 is on page number 121. And the example says, an item marked at rupees
840 is sold for rupees 714. What is the discount and discount percentage? So the question says an item marked at rupees 840. Marked means marked price is nothing but cost price. Okay. An item marked at rupees 840 is sold for rupees 714. Okay. Now as we can see 840 पे वो मार्क्ड है और उसको हमने बस उसको सेल किया है 714 पे. इट मीन्स मार्क प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. इट मीन्स हमने कुछ डिस्काउंट दिया होगा कस्टमर को, जब भी तो हमने कम में बेचा उसे. ठीक है. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज. ओके. सो फर्स्ट लेट्स राइट द मार्क्ड प्राइस. $840. Now let's write the selling price. 714. So discount would be marked price minus selling price. ठीक है. So 840 minus 714. Okay. Children, this is also a formula. इसको आप as a formula learn भी कर सकते हो या फिर आप समझ भी सकते हो. कैसे कि जब मार्क्स प्राइस उसका 840 है और सेलिंग प्राइस 714 है, सो इट मीन्स कुछ ना कुछ हमने डिस्काउंट ही दिया होगा. दैट्स व्हाई आवर सेलिंग प्राइस इज लेस. ओके. सो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? उस मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, विल गेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन. ओके. सो वही हमने यहाँ पे किया. सो 840 minus 714, this would be 10, this would be 3. So 10 minus 4 is 6, 3 minus 1 is 2, 8 minus 7 is 1. So 126. अब 126 का हमें मिला डिस्काउंट, बट अभी हमें डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है. सो डिस्काउंट परसेंटेज equals to discount upon CP into 100. As I told you, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन CP into 100 करते हैं, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस अपॉन CP into 100. सिमिलरली डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट अपॉन CP into 100. Always remember the base will be cost price. Okay. So discount is 126 rupees. CP is 840 into 100. So 10 से 10 कट, 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Okay. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 are 12, 2 3 are 6. Now we know that 63 and 21 are multiples of 7. So 7 3s are 21, 7 9s are 63, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So this is 3 into 5, 15%. So it means the discount percentage comes out to be 15%. Okay. This was our example number 3. In this example, we talked about discount and discount percentage. Discount निकालना बहुत easy है. Cost price में से selling price माइनस कर दो. Selling price हमेशा कम होगा जब भी डिस्काउंट आएगा, क्योंकि हमने सेल किया कम में तो कुछ डिस्काउंट दिया जब भी कम में सेल किया. ठीक है. सो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस SP. मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं. ठीक है. So after calculating the discount, we can calculate the discount percent, because we know that
discount percent equals to discount upon CP into 100 and CP is 840. Mark price and cost price are one and the same thing. So उससे हमने discount percentage calculate किया which comes out to be 15%. Okay, so this was our example number 3 of chapter number 8. Now children, after example number 3, we will be starting with example number 4. Example number 4 is on the same page, page number 121. Okay, so the example says the list price of a frock is rupees 220. A discount of 20% is announced on sales what is the amount of discount on it? And its sale price. So the question says the list price of the frock is rupees 220. List price is nothing but marked price or cost price. Alright. So the cost price of a frock is 220. CP of frock is 220 rupees. Alright. A discount of 20% is announced on sales. So what is the amount of discount? Now हमें इसमें 20% discount पता है, इस पे मिला है. So we have to calculate the amount of discount. So amount of discount equals to 220 का 20% निकाल देते हैं, which is 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. So this is 44 rupees. अब ये 44 रुपीज जो हमारे पास आया, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉक इतने की हो गई अब आफ्टर डिस्काउंट. नो चिल्ड्रन, मैं आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. दिस अमाउंट विल बी subtracted from 220 in order to get the selling price. So now our next question is to find its sale price. So sale price would be 220 minus 44. Okay, so 220 में से 44 minus किया, this would be 10, this would be 1, 11 and 1. So 10 minus 4 is 6, 11 minus 4 is 7 and 1 as it is. So we have 176 rupees. Okay, so our amount of discount is 44 rupees. And now this price of this frock would be 176. So now the selling price would be 176. I hope this is clear. So this was our example number 4. In this question we were given the cost price, उससे हमें discount का amount निकालना है and then selling price. So the amount of discount is 44 and selling price comes out to be 176. Now children, let's come to example number 5.
example number 5 is on page number 122. So example says Sohan bought a second hand second-hand refrigerator, okay, for rupees 2500. Then spent rupees 500 on its repair. Then spent rupees 500 on its repairs and sold it for rupees 3300. Find his loss or gain percent. Now the question says Sohan bought a second-hand refrigerator for rupees 2500. ठीक है, so total cost of refrigerator is refrigerator, yes. So the total cost of refrigerator equals to 2500 में तो उसने purchase किया, means जो CP है that is 2500, but after that he spent rupees 500 on its repairs. तो children, अगर हम कुछ परचेज करके उसको रिपेयर कराते हैं, उस पर कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट मनी इज ऑल्सो कम्स इन आवर कॉस्ट प्राइस, वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, और वी कैन से कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, इट्स टोटल कॉस्ट की जगह हम चलो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 2500 प्लस 500. जो उसकी रिपेयर पे जो अमाउंट लगेगा दैट वुड ऑल्सो बी एडेड इन दी सीपी. तो ये हो गया 3000. सो इट मीन्स हमारा सीपी है 3000 नॉट 500. ओके, दिस वुड बी एडेड इन दिस. ये दोनों ऐड होंगे जब भी हमारे पास आएगा सीपी. नाउ एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 3300. इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 3300. and I told you when CP is smaller than SP, जब SP बड़ा होगा it means हमें होगा profit, right? because हमने जब उसको परचेज किया वो हमें 3000 का पड़ा, और जब हमने उसको सेल किया हमने उसको 3300 का सेल किया, means profit of rupees 300, right? so profit हुआ, और कितने का हुआ profit 300 rupees. ये कैसे निकाला हमने 3300 माइनस 3000. so this is rupees 300, profit of rupees 300. now find his loss or gain percentage. अब हमें ये तो पता है कि gain हो रहा है, ठीक है. now we have to calculate the gain percentage. so gain percentage equals to gain upon CP into 100. gain is rupees 300, CP is 3000 into 100. so 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 3 1 3, 3 10 30. so 10% का उसको हुआ gain, और we can say profit. so profit of 10%. okay, so how we calculated this? let's see once again. हमारे पास given था that 2500 इसका सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर का CP है, but
he spent ₹500 on its repairs as well. एंड जब भी हम कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में जो हमने परचेज करी है, that we add in the cost price. So the total cost price of this refrigerator is 2500 plus 500, which is 3000. Now we know that the CP is 3000 and SP is 3300. So it means हमें हुआ profit of 300. Profit निकाला हमने SP minus CP करके, ठीक है, SP minus CP. So 3300 minus 3000 equals to ₹300. Okay, and then अब हमें ये पता चला कि हमें इस पे गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ, ठीक है. So it means अब हमें निकालनी है gain percentage. So for that we have gain upon CP into 100. I told you profit percentage equals to profit upon CP into 100. Loss percentage equals to loss upon CP into 100. Always the base will be CP. So gain is 300, CP is 3000 upon into 100. So we get 10%. It means हमें gain हुआ, सोहन को gain हुआ 10%. Okay, so this was an example number 5 of chapter 8. Now let's come to example number 6, children. It is on page number 123. Example number 6, page number 123. The example says, a shopkeeper purchased $200 bulbs for ₹10 each. However, five bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. Find the gain or loss percentage. So, in this question, we are given 200 bulbs एक शॉपकीपर ने परचेज करे for ₹10 each. So, पहले तो हम इससे टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं. So, total number of bulbs purchased 200. And so cost of one bulb ₹10. So cost of 200 bulbs equals to 10 into 200. So it means ₹2000. Okay, now अब ये 2000 रुपीज तो शॉपकीपर ने
पे करे, जिससे हम उसने 200 बल्ब लिए. इट मीन्स दिस इज दी CP. ठीक है. नाउ however 5 bulbs were fused and had to be thrown away. अब उसने परचेज तो 200 ही करे थे, उसमें से 5 फ्यूज निकले. ये तो बाद में पता चला ना, जब वो परचेज कर चुका था. सो इट मीन्स नाउ अब हमारे पास, अब उसके पास, शॉपकीपर के पास कितने बल्ब्स हैं? बल्ब्स लेफ्ट विद शॉपकीपर, -200 -5 which is equal to 195 and had to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. So अब selling price कितना है? 195 into 12. Why? Because C, शॉपकीपर ने परचेज करे 200 बल्ब्स, ओके, फॉर ₹10 ईच. तो उसका CP हो गया 2000. ठीक है. अब जब उसने वो परचेज कर लिए, सो ही नोटिस दैट इसमें से 5 बल्ब्स तो फ्यूज्ड हैं, सो उनको तो फेंकना पड़ा. सो इट मीन्स नाउ द बल्ब्स लेफ्ट विद शॉपकीपर आर 195 एंड अब उन 195 बल्ब्स को ही सोल्ड फॉर ₹12 ईच. ओके. सो अब हमें 195 इंटू 12 करना है, विच विल गिव अस 5 2s are 10, 2 9s are 18 plus 1 19 and 2 1s are 2 plus 1 3, 1 5s are 5, 1 9s are 9, 1 1s are 1. Now 9 plus 5 is 14, 1 carry. 9 plus 1 is 10, 10 plus 3 is 13, 1 carry and 2. So we have 2340. अब ये जो 2340 आया, ये है हमारा सेलिंग प्राइस. सो अब हमारा कॉस्ट प्राइस था 2000. दिस इज दी कॉस्ट प्राइस. सो आवर कॉस्ट प्राइस इज 2000, आवर सेलिंग प्राइस इज 2340. इट मीन्स 5 बल्ब्स थ्रो करने के बाद भी शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है. क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन cost price. Means simply cost price is smaller than selling price, which means profit. Okay. Now we have to calculate the profit percent. Right? We have to find the gain or loss percent. अब हमें ये तो पता चल गया हमें गेन हुआ है, पर अब कितना परसेंट हुआ है? So for that we have profit upon CP into 100. So profit is rupees. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट हियर. SP माइनस CP होता है. सो 2340 माइनस 2000, सो वी हैव 340 एज द प्रॉफिट. सो नाउ वी विल राइट प्रॉफिट अपॉन CP. CP इज 2000 इंटू 100. सो 10 से 10 कट, 20 से 20 कट, 2 1s are 2, 2 7s are 14. So it means the shopkeeper gained a profit of 17%. Okay. So what we did, shopkeeper purchased 200 bulbs for ₹10 each. So the total CP is 10 into 200, 2000. Now 5 bulbs he has to throw away. So अब जो 5 bulbs throw करके उसका total bulb रह गया 200 minus 5, which is 195. Now he sold these 195 bulbs for ₹12 each. So 195 into 12 कर दिया, we got 2340, 2340. Now we know that SP is greater than CP. It means he gained a profit. अब कितना profit? For that we will minus CP from SP. So we got profit of ₹340. Now profit percentage equals to profit upon CP into 100. So 340 upon 2000 into 100. So it comes out to be 17%. Okay. So the profit is 17. Profit percentage is 17%. Okay. So this was our example number 6 of chapter 8. Now children, example number 7 we will be starting in our
next video. Till then, practice all the examples of this chapter as well. And if you have any doubt, any query, please write in our comment section below. Thank you.